Good evening, everyone. Welcome to one more book launch event. My name is Sandeep Singh, and I am the host for today on behalf of Adhyyan Books. आशा करता हूँ कि आपको हमारे नए बुक्स और उनके ऑथर से मिलने में बहुत मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुरू करते हैं आज का बुक लॉन्च इवेंट। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे, उस किताब का नाम है अनमास्किंग स्टार्टअप रियलिटी ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयज। इस किताब के ऑथर हैं जुबिन मिश्रा। जुबिन, तो आइए ऑथर के बारे में जानते हैं, जुबिन मिश्रा जी के बारे में। जुबिन मिश्रा इज अ हाईली एस्टीम्ड एंड सीजन्ड बिजनेस लीडर with an exceptional career spanning almost a quarter of century, during which he has acquired a wealth of diverse experiences across various business domains. His career has spanned a multitude of functional domains, ranging from marketing and communication to sales and business development, M&A, investment banking, strategic deal making, technology adoption, process excellence, product development, human resources, and change management. तो आइए अब इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। अनमास्किंग स्टार्टअप रियलिटी ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयज is a candid exploration of entrepreneurship, challenging conventional notions of success. The book shares stories of resilient entrepreneurs who have faced adversity and failure before achieving their goals, offering valuable insights for readers. It dispels the illusion that transitioning from employee to entrepreneur is easy and questions the belief that a prestigious background ensures success, urging readers to find their unique path to prosperity. तो चलिए इस बुक के बारे में अब और इस बुक के ऑथर से जानते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर जुबिन मिश्रा। Thank you, Sandeep, and thank you, Team Adhyyan, for one agreeing to publish the book and also hosting me. Pleasure is all mine, and good to be talking to you and your readers and your other set of authors and people on your network. So, thank you for inviting me to this book launch event. हेलो जुबिन जी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपकी बुक अमेजोन पे लाइव हो गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? So obviously it's a good feel. काफी दिन लगते हैं किताब लिखने में. You are not sure कि वो किताब कब बनेगी, बनेगी तो कैसे लगेगी लोगों को. So yes, it's a good feel. It's a feel of like giving birth to somebody, and and I'm surprised and delighted at the same time that this has happened, and this has happened right before the year ends. So it's a good feel. दैट्स रियली गुड। सर, अब हम बुक के बारे में बात करते हैं आगे, जिससे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी बुक और आपके बारे में अच्छे से जान पाएँ। उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। So Sandeep ji, I am a corporate executive. काफी साल, like many others, I've worked in corporate. Last 5-6 साल I've been running a growth advisory. मैं ज़्यादातर SMB और MSME कंपनियों के साथ काम करता हूँ. I work with a lot of academic institutes. I work with a lot of entrepreneurs. So लगभग 2 या 3 चीजें में मेरी फोकस होती है. एक कि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में जो एंटरप्रेन्योर है उसे कैसे सक्सेसफुल किया जाए. हमारी जो एसएमबी और एमएसएमई कंपनीज हैं उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, उन्हें कैसे ग्रोथ पाथ पे लिया जाए, उन्हें कैसे और सक्सेसफुल बनाया जाए, उनकी जो अगली पीढ़ी आ रही है बिजनेस पे उनको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए. और ऐसे कई लोग होते हैं जो कि आप पहले एम्प्लॉयज होते हैं मेरे तरह, फिर वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं. बनना सब चाहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने में और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में काफी फर्क होता है. तो ये जर्नी मेरे से होके गुजरती है. शायद मैं, हमारी टीम, काफी लोग हैं मेरे टीम में जो हम इसी प्रयास में रहते हैं कि हाउ वी मेक दीज पीपल सक्सेसफुल. और ये लास्ट 5-6 साल के मेरे जो इस एरिया में काम है उसका एक बड़ा आउटपुट या आउटकम बोलिए ये किताब है. तो ये दौरान जो सीखने को मिला, ये दौरान जो लोगों से जानने को मिला, उसी से ये किताब बनी हुई है. तो दैट्स माय बैकग्राउंड. आई वर्कड अबाउट क्लोज टू 25 years. उसमें पहले 17-18 साल या शायद उससे ज्यादा I worked with large companies like Accenture, HSBC, Sony, LG's in very senior roles. I am an MBA grad. And my life has gone in corporate strategy.
और अब मैं ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और मिड साइज बिजनेस के साथ काम करता हूँ। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो बहुत अच्छे से आपने बताया अपने बारे में। तो चलिए सर, अब बुक के बारे में हम जानते हैं आपसे कि बुक आपने क्यों लिखी है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट हैज मोटिवेटेड यू टू एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ के ट्रांजिशन किया है रोल को अपने एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी में। तो जो आपने बुक में भी डिस्कस किया है अच्छे से, तो उसके बारे में आप जरा लाइट डालिए। संदीप जी, अक्सर वी ऑल राइट अबाउट सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फेल्यूर किसी को पसंद नहीं है, ना ही कोई लिखते हैं। और हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ आप और 10 लोग ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। लास्ट 15-20 साल में एंटरप्रेन्योरशिप की एक होड़ लगी हुई है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर। छोटे शहर जाइए, टियर 2 सिटीज जाइए, गांव जाइए, बड़े शहर जाइए, बच्चे, बूढ़े, रिटायर्ड लोग, मेरे जैसे नौकरी पेशा लोग, सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। लेकिन और अभी एंटरप्रेन्योर्स बनने के जरिए भी काफ़ी हैं। काफ़ी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि फाइनेंस अवेलेबल है, अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। There's a lot of growing opportunity for Indians and Indian companies. तो सब आते हैं बनने के लिए एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, काफ़ी लोगों को मायूसियत होती है। तो ये 6 साल में जहाँ मैंने काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सक्सेसफुल बिज़नेस वालों के साथ काम किया है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं मिला हूँ, जुड़ा हूँ, जो शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शायद उन्हें कोई नहीं जानता है। और जब मैं अपने रिसर्च में लगा था, तो मैंने ये देखा कि सब जो सक्सेसफुल है, सबकी स्टोरीज़ हैं। जो सक्सेसफुल है, वो तो खुद भी अपनी स्टोरी लिख रहा है। लेकिन जो कहीं हार के, मायूस होके चले गया है, उसकी स्टोरी लिखने के लिए कोई नहीं है। बट उन लोगों के स्टोरीज़ में काफ़ी सीखने को है, उन लोगों के स्टोरीज़ में काफ़ी जानने के लिए है। और मेरा ये मानना था कि कोई ऐसा हो जो उनको नज़दीक से देखा हो, उनके फेल्योर को समझता हो, उनकी एक पार्ट ऑफ द जर्नी जिया हो, शायद वो जस्टिस कर सके। सो ये प्रयास था मेरा कि उनकी लाइफ को लेके आई राइट अ बुक। आई टेक द लेसन्स ऑफ द बुक एंड टेक अ ह्यूमन एंगल। सो दिस बुक इज़ नॉट अ मैनेजमेंट बुक, इट्स नॉट अ बुक ऑन entrepreneurship per se. I think it's a book on, it's about people. It's about humanizing entrepreneurship. It is about making entrepreneur make जो एंटरप्रेन्योर की एक मेक बिलीव वर्ल्ड हो जाती है कभी-कभी। हम सोचते हैं कि एवरीबॉडी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ फैंसी जॉब, इट्स अ फैंसी रोल, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल, नॉट एवरीबॉडी इज़ cut out to be an entrepreneur. So this whole book is an attempt to make them feel human, make the world understand that it's perfect to try and be an entrepreneur. It's perfect to try and become somebody big, try and have dreams, but you can always fail, and you can fail and then go back to a normal life and come back again in your second innings and succeed. So इस दौरान करीबन 600 लोगों से मैं मिला जो कि एंटरप्रेन्योर थे। काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, उसमें से कुछ लोग पहली इनिंग्स में शायद ना सक्सेसफुल हुए हों, लेकिन देन दे हैव कम बैक अगेन, नॉट दे आर डूइंग वेरी गुड। So this is a sum total of the journeys of not, I would say, many people, but yes, from my perspective, it is a journey of about 600 people who would have seen the world of entrepreneurship. Some have succeeded, some have failed, some have given up on their dreams. So it is my interaction with them that motivated me to write. And I wanted to bring the stories of people who have not failed, because there is a lesson for everybody who wants to be an entrepreneur. And it is sometimes important for them to know what can set them off a failure and what can set them off a success. And this book is an attempt to foster that conversation. It's a very conversational book. It's not, I've tried avoiding any jargons, I've tried avoiding bringing any, because the theories and the lessons, the management principles is known to everybody. I've looked at it very closely from a life perspective. I've leveraged my role as a counselor or a mentor, at some parts a teacher, to see how can I make it more real for the people, more real for everybody who wants to be an entrepreneur, everybody who's reading the book. That's what motivated me to write the book in the first place. तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबको वो जज्बा है, और बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन इतना ईज़ी नहीं है इसमें एंटरप्रेन्योर बनना। सही और कहा। इस बुक में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो उसी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि कोई आप स्पेसिफिक कोई एक्सपीरियंस या स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो
जिसने आपको इंस्पायर किया इस जर्नी पे एक्सप्लोर करने के लिए एंटरप्रेन्योर? सो मैं एक शायद एक 50 ईयर ओल्ड इंसान से मिला बॉम्बे में, जो कि एक ज़माने में बैंक में काम करते थे। फिर उन्होंने कुछ साल पहले छोड़ के अपना कुछ काम चालू किया। उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना था। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने घर में सबको बता के सो उन्होंने 3 दफ़ा ट्राई किया और 3 दफ़ा वो फेल हुए। मैं उन्हें पहली बार 2017 में मिला था और 2017 में उन्होंने नौकरी छोड़ के उन्होंने अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू की थी एंड ही फेल्ड वेरी बैडली। ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अ, काफ़ी बार जब मैं बॉम्बे गया तो कभी-कभी उनसे बात हो जाती थी, कभी बट वो जब भी वो उनका कुछ जानने का मन होता है या कुछ उन्हें सीखने की ज़रूरत होती, तो कुछ समझना होता, तो मुझे कॉल करते थे। तो मेरा उनके जर्नी के करीबन बॉम्बे से लेके 6-7 साल तक रहा। सो इन दिस जर्नी वो 3 दफ़ा he faced a failure and he started something. He started something small and he started right in the ending days of COVID, and he's doing extremely well. And he told me for every time he failed, how he came back and why he was so sure that he will succeed. And for him, success was not about money. And what inspired me was that success is sometimes believing that you can achieve potential. Because success की काफी सारी परिभाषा होती है। हम सब अपने अपने तरीके से सक्सेस को डिफाइन करते हैं। उनके लिए शायद उनको कोई जानता भी नहीं होगा, शायद उनकी ना इतनी फैंसी वेबसाइट है, ना सोशल मीडिया फॉलोइंग है, ना वो किसी किताब के कवर पे है, ना किसी मैगज़ीन के कवर पे है। उनके लिए सक्सेस था कि क्या मैं उस उम्र में अपने सारे तजुर्बों को निचोड़ के क्या मैं कुछ बन सकूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या मैं बन सकूँ जो मैं बन सकता हूँ? एंड दैट्स इंस्पायरिंग क्योंकि उस उम्र में शायद लोग रिटायर हो जाते हैं। 3 बार फेल होते हो तो और काफ़ी पैसे भी चले जाते हैं, तो नॉर्मली फैमिलीज़ आर नॉट सपोर्टिव। तो दैट्स वेयर आई लर्न्ड दैट व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। और फैमिली की रोल मुझे समझ में आई कि काफ़ी दफ़ा एज़ एंटरप्रेन्योर्स हमारे दोस्त, हमारे फैमिली, हमारे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी बहुत ज़रूरत होती है, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो एक फॉर्मल सपोर्ट सिस्टम होता है, एक इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम होता है। और काफ़ी बार जब हम फेल करते हैं, तो ये नहीं फेल करते हैं कि मार्केट नहीं था या हमारी स्ट्रैटेजी गलत थी या हमने कुछ गलत किया। कभी-कभी हम इस वजह से फेल कर जाते हैं क्योंकि हमारे में रेज़िलियंस नहीं होती। कभी-कभी हम फेल कर जाते हैं बिकॉज़ हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। कभी-कभी हम फेल कर जाते हैं बिकॉज़ हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। कभी-कभी हम फेल कर जाते हैं क्योंकि हम शायद रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारी रीज़न्स होती है। आप ना एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल होने में जितने रीज़न्स है, उतने फेल्योर होने में भी रीज़न्स है एंड नो टू रीज़न्स आर यूनिक। तो ये मुझे काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट मेरा बुक का मैं लोग पूछते हैं कि आपने ये बुक कैसे लिखी है? ऐसे मैं आई वांटेड टू डू माय पीएचडी बट आई एंडेड अप एंटरिंग इनटू लॉ and I thought this started as a research for my PhD work, and then for different reasons I said no, let me make it a book, and then I'll obviously if things happen I'll get it into my doctoral thesis later on. तो उसके बाद हम काम करने लगे तो हम काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं और ऑब्वियसली हम काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिनके लिए वी रेज़ मनी, वी बिल्ड देयर कंपनीज़, काफ़ी क्लोज़ली काम करते हैं वेंचर इकोसिस्टम के साथ, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, प्राइवेट इक्विटी के साथ। तो काफ़ी लोग पैसे उठा लेते हैं, काफ़ी लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसमें कोई 20 साल का होता है, कोई 40 साल का होता है। तो एवरी जर्नी ऑफ फंड रेज़ फॉर अस, और एवरी जर्नी ऑफ doing some work with a startup was always an inspiration for me and my team. So that motivated me. I said, this, all of us are betting on the India story. All of us are betting big on that India, and the future of India is entrepreneurship. Now, entrepreneurship is going to be a big. It's not anymore a possibility. It is a real thing. We have all seen the success stories which have come out of India. The next decade is going to be of people who create wealth and value by becoming entrepreneurs. तो अगर ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस सिस्टम में लोग रह के एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोस एंड कॉन के बारे में बात करें, सक्सेस और फेल्योर के बारे में बात करें। सो दैट वाज़ अ ह्यूज मोटिव फॉर मी टू पर्सनली गेट इनटू राइटिंग दिस बुक। Thank you for sharing your experience, Jubin. In your book, you have discussed unmasking, the startup reality for those who have transitioned from employment. Could you shed light on that particular aspect?
that you believe is often misunderstood or underestimated by aspiring entrepreneurs? सो इसके दो पार्ट्स है। सो एक संदीप जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। काफी लोग एम्प्लॉयज होते हैं और काफी एम्प्लॉयज सक्सेसफुल भी होते हैं, काफी पढ़े लिखे होते हैं। दे कम फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट, सम आर फ्रॉम आईएम्स, आईआईटीज, यू नेम इट, पीपल आर फ्रॉम एवरीबडी। सो पहले बात है ना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एज बैरियर नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस बैरियर है। देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स जो हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कि काफी सक्सेसफुल है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन पूरा नहीं, काफी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है कि वो 20-25 साल काम करने के बाद एंटरप्रेन्योर बने। So entrepreneurs come in all shape and sizes. They come in all kinds of, from all kinds of background. So what is more important to understand that is there's no single recipe for success, and there is also not a single reason that will you can attribute to failure. There are many things that shape an entrepreneur. कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद आपकी मार्केट ठीक नहीं होगी. Many people started their journey right in COVID. They failed because maybe the time was not appropriate. So एक जब मैं unmask करने का, why I named this book as Unmasking. A lot of people generalize failures and success in a case of an entrepreneur or an entrepreneurship. You cannot generalize the success or failure. It is not possible to generalize success and failure. So वो एक perception बन जाता है. ये perception को unmask करने का effort है. This book is about telling people that entrepreneurship is a very it's it is as close to study of life itself, study of people itself. It involves management principles, like your psychological the study of human beings. It involves everything that we've known as people and as business disciplines. But एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. We make assumptions, we make our own interpretation of success and failures. So both have been will have its own truth. That's one aspect. The second aspect is about, this is how the people interpret entrepreneurs and entrepreneurship. The second aspect, which is more important, is the people who are entrepreneurs themselves. It's good to be ambitious, it's good to be optimistic, it's good to be, but sometimes it is good to steep yourself in reflection. It's good to introspect. It is good to understand yourself before you start a journey. Many people get into entrepreneurship, sadly, without doing a reality check. काफी लोग entrepreneurs बनने का काफी उसमें जज्बा रहता है, बट वो जज्बे के साथ रियलिज्म नहीं रहता. And that is an effort to unmask that side of the entrepreneur. It is very important that when you're trying to become an entrepreneur, you can become an entrepreneur when you're in school, in the college, in your first year of work, in your 10th year of work, in your retirement age. So a lot of the things are possible, but first reflect deep about what you want to do, why you're becoming an entrepreneur, what do you want to achieve, is one part of it. How you want to achieve is the second part of it. Are you ready to sacrifice? Are you ready to go through the journey? Are you ready to embrace that challenge? Because for everything that you see on a newspaper, healing and talking about success, there are many people who fail extremely. They have extreme plights. So this is an attempt to unmask the beliefs that an entrepreneur has about himself or herself. It's very important that people who write about entrepreneurship, people who are in the society, they look at entrepreneurship a little more differently. They look at entrepreneurs a little more differently. Therefore, they should be a little more enabling. The guys who want to be entrepreneurs, they need to look at themselves also very differently and also challenge themselves, challenge their own belief about how they think themselves in the role of an entrepreneur. So this unmasking is essentially about that. So, sir, from your perspective, how does the mindset of employees transitioning to entrepreneurship impact the success or challenges they face within the startup environment? I think this is the most relevant part. If you see this book, as I've been telling in the last 20 minutes of the conversation, the entrepreneurs come in all shape and form. And what is important to understand that today, many people who are employees want to be entrepreneurs. They want to have some amount of experience and then become entrepreneurs. Now, you need to understand two things. When you're an employee, you're working for somebody. It's a very different approach. Many employees are successful because, to be successful as an employee is a wholly different ballgame than being successful in entrepreneurs. One of the biggest misgivings people have, that I have a certain academic background, I have a certain education background, I have a certain experience background. मैंने ऐसे कंपनीज में काम किए, मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये काम में अच्छा हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ.
entrepreneur is fundamentally a very different from an employee. Just जो employee से expectation होती है work की, और जो employee जिस environment और context में काम करता है, वो entrepreneur शायद बहुत ही अलग context और environment में काम करता है. इन दोनों को bridge करना आसान नहीं होता. For an employee to become an entrepreneur, first you have to embrace uncertainty. Second, you have to embrace a certain degree of predictability that you have. You have to also embrace the fact that the resources which you always took for granted as an employee, you may not have. The accountability and ownership that you perhaps have as an employee, maybe you need more than that as an entrepreneur, far more than that. The risk of employment is very different from a risk profile of being an entrepreneur. So ये माइंड शिफ्ट इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होती. जब आप एम्प्लॉय रहते हो, आप आपकी एक फिक्स लाइफ होती है, फिक्स रूटीन होती है, and you may excel at that, you may excel in that environment, and it's not that you will fail as an entrepreneur, but I always say that between the journey of an employee and entrepreneurs, there are a lot of people who seamlessly transition, but many struggle because they have not been able to do it. Many jump into being an entrepreneur and they realize that this is not meant for them. The excitement, and I always say that the old age saying and the adage, that grass is greener on the other side, is always so true here. We as an employee, I am always hoping that yes यार, मैं काफी सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर आगे भी सक्सेस मिलता रहेगा, तो why not try and do it something for myself and become more successful. ये एस्पिरेशन अच्छा है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपको वो सक्सेस मिले. तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट काफी लोग जो आज के दिन पे करीबन 30-35 लोगों को मैं पर्सनली मेंटर करता हूं, जो आप जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. मेनी आर फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, बट आई फर्स्ट टेल देम दैट अगर आपको आज एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आपका एंटरप्रेन्योर बनने का ख्याल आया है, गिव योरसेल्फ सम टाइम. आप 3 महीना 4 महीना आप जिस जगह में जाना चाहते हो, जिस एरिया में जाना चाहते हो, उसे बहुत अच्छी से समझने की कोशिश कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, देखिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे फिट बैठते हैं. You give yourself a time, don't jump into that, take an informed decision. My first when people first come to me, I ask them, come back to me after 7 days. I tell them the pitfalls of being an entrepreneur. I tell them what are the realities of an entrepreneur. I tell them how the market is currently. Maybe how is the market is currently from a VC environment perspective, how's the market is from a demand environment perspective. I tell them, this is the risk that you may have as an entrepreneur in the current context. Would you want to give yourself some time? Would you want to make sure that you have enough cash reserves to take care of your family? My first question to them is your family ready more than you being ready? Because families also have a huge, they take a huge impact as much as they partake in the success of entrepreneur. They take a huge risk onto themselves when the family member decides to become an entrepreneur. So that's always my advice, ki take a pause, reflect, build a conviction, test that conviction, go with your list of assumptions, try them out, और उसके बाद आगे बढ़िए. So, don't take a blind date with entrepreneurship. It seldom works. People, you may have high risk taking ability, but high risk taking ability does not mean that you will have to be foolhardy. You need to be intelligent about the choices you make as an entrepreneur. Sir, were there any unexpected revelations or findings during your research that significantly shaped your understanding of the experiences of employees turned into entrepreneurs? जैसे कि आपने बहुत रिसर्च किया है इसमें, उसमें आपको कुछ अलग सा फाइंड किया? So I think मेरा सबसे बड़ा रेवलेशन जो कि शायद हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन बात नहीं करते उसके बारे में, इज द रोल ऑफ फैमिली. सी एंटरप्रेन्योरशिप में हम कैपिटल के बारे में बोलते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बोलते हैं, रिस्क के बारे में बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, कस्टमर के बारे में बोलते हैं. आई थिंक पर्सनली आई रियलाइज दैट जो ऐसा नहीं कि लोग नहीं बोलते हैं ऑन द फैमिलीज के बारे में. द बिगेस्ट मेक और ब्रेक फैक्टर फॉर एन एंटरप्रेन्योर टुडे, स्पेशली हु इज एन एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उसमें भी फैमिली का रोल आता है. लेकिन क्योंकि ये किताब एम्प्लॉयज पे लिखी गई है जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और काफी एम्प्लॉयज और ज्यादातर एम्प्लॉयज जो है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं होते. इनफैक्ट अगर मेरी रिसर्च जो कि बहुत अगर वेरी हाई लेवल पे देखूं, पीपल हु हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर समबडी, जो कि ना एम्प्लॉय रहे हैं, they have a much higher success rate than somebody who's an employee wanting to be an entrepreneur. It's very sad. It's almost
not intuitive कि why is somebody who's an employee trying to become an entrepreneur fails. Because from a conditioned environment, from a conditioned being where a family is used to safety and security net, when you transition, there is a the risk of failures amplified. तो मेरा जो सबसे बड़ा रेवलेशन रहा पर्सनली कि फैमिलीज प्ले ह्यूज रोल ये इस दौरान जब मैं काफी लोगों से मिला हूं, काफी लोग एक बार हार के जैसे आई वाज टेलिंग यू दिस अबाउट बॉम्बे इवेंट वो वापस आना चाहते हैं एंड दे हैव गॉट मी टू टॉक टू देयर फैमिलीज की यू टॉक टू माय वाइफ एंड चिल्ड्रन सेइंग कि दे शुड अलाउ मी आई हैव सीन घर टूटते हुए आई हैव सीन रिश्ते टूटते हुए आई हैव सीन पीपल सफर हेल्थ इश्यूज and then I today believe that for an employee to be an entrepreneur, if the single biggest factor I would say to take care of it is address the family. Your family's direct involvement in your success becomes very very imperative. A lot of people say nahi meri wife kaam karti hai, mere husband kaam karte hain, I come from a good family, my parents are settled. ऐसा नहीं होता ऐसा क्योंकि safety and security is a very notional thing, it's a very subjective thing, and there is each family के context में safety और security बहुत अलग होती है. तो सबसे बड़ा मेरा एडवाइस लोगों का रहता है कि पहले क्योंकि ये रेवलेशन आया, जैसे आपने सही कहा, ये वर्ड रेवलेशन था मेरे लिए, क्योंकि फैमिली इस हद तक इम्पैक्ट कर सकती है एक आदमी की सक्सेस और फेल्योर. फैमिली बहुत शेप करती है योर एबिलिटी टू टेक ए रिस्क. आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, क्योंकि आप जब एम्प्लॉय हो, शायद आप शादीशुदा हो, शायद आपके बच्चे हैं, शायद आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, शायद आपके ईएमआईज है, बहुत सारी चीजें होती है. तो इन माय माइंड if you read the book and I see काफी लोग इस ये पे आज लॉन्च को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि when you read the book with the lens of the family. This is a story of people. This book is essentially a work about understanding the mind of an entrepreneur, largely from his or her mindset and also from the mindset of the families. A lot of the things come from his interaction with his friends, peers, his partners, his families. So family का dimension और family का context success में बहुत important है. और मैं हमेशा चाहूंगा कि जो लोग entrepreneur बनना चाहते हैं, ensure that your family is aligned to your fate, and they have the faith to challenge anything that you may encounter, and then be a support system. Cultivating that support in the family is very very important for an entrepreneur. आपने बहुत अच्छे से बताया कि फैमिली का रोल कितना इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योर जर्नी में, एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने में उसका फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, सो हाउ डू यू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन द leadership experiences of former employees and their success at entrepreneurs in shaping the trajectory of their ventures? See, leadership experience काफी हद तक help करता है, क्योंकि obviously when you are a leader in a good setup, in a formal setup, you have a lot of learning that you get. A leadership is also about how you manage your resources, how you manage your employees, how you manage your people. Leadership is also about optimizing and maximizing. Both the things work together. How you manage your resources, how you do plan your success in the context of being a leader, employment setup. It's a very very important learning. And also, as I said, there is a difference between an employee and somebody. Employees could be anyone. Somebody who's worked for 2 years is an also employee. Somebody who's worked for 20 years is an employee. A leader in the context of a large company is also an employee, but is a leader, because and being a leader in a large company, you come with a lot of experience. So a leadership, if assimilated well, if understood well, if translated well into the realms of the entrepreneurial journey, is always useful. But कई बार ये होता है, leadership also makes some of us have a blind side. कई बार ये होता है कि मैं लीडर हूँ और मैं शायद ये सोचता हूँ कि यार मैंने एक कंपनी बहुत बड़ी बनाई है, मैं यहाँ पर 100 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ, मेरे नीचे 5,000 लोग हैं, तो मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे तो मार्केट समझ में आती है, मैंने इतना देश देखा है, दुनिया देखा है, कस्टमर देखा है, मैं तो इसी एरिया में काम करता हूँ. शायद ये हमेशा जरूरी नहीं. आई थिंक which is why I say it is always a contrast, it is a delicate balance. कोई एक पहलू नहीं है कि आप बोल सको कि मैं लीडर हूं तो सक्सेसफुल होऊंगा और लीडर हूं तो शायद सक्सेसफुल ना होऊंगा.
So leadership is but I would answer it differently. Leadership is important in the context of being an entrepreneur, because the day you become an entrepreneur, the first thing you learn to become is a leader. आप जब अकेले हो, then also you're leading with a vision. You're leading with a vision for your partners, your customers, the first employees that you hire. You always leading with a vision. You will have to lead, because entrepreneurship is about taking charge. It is about taking ownership and accountability for the future that you want to create for yourself. So by virtue of being a leader, a part of this experience comes to you naturally. It is, if you are not also a leader, you'd still need a leadership. So leadership and entrepreneurship go hand in hand. You cannot be a good entrepreneur, a successful entrepreneur, if you're not leaders. So a lot of the time when people have actually ventured into being entrepreneurs, they have a sound business idea, they have a sound proposition. A lot of them actually turn to maybe people like us, or maybe other mentors, maybe their bosses, their advisors, their teacher, because they all want to imbibe the lessons of leadership. It is very, they themselves realize that they are challenged by leadership. So it is important that when you are an entrepreneur, you act, you think, you believe, you perform, you do and not do things as a leader. If you're a leader, definitely you have a jump start, you have an advantage, but you need to maximize that leadership abilities and a potential. But intrinsically, you cannot become or cannot think of succeeding as an entrepreneur if you have not change yourself as a leader, if you've not evolved as a leader. And leadership in this context is largely of being how you are, because you will every day encounter new things. So being a situational leader, being a leader who is a people's leader, a leader who is able to, there are many dimensions of leadership, and most of these dimensions are relevant in the context of entrepreneurship. So first, it's important to understand your leadership style. It's very important to understand your orientation to people, orientation to situations, orientation to risk. How do you look at business in general? So if you want to be an entrepreneur, as I said, reflection is important. Coupled with reflection, being realistic is important. Third, make an assessment of where do you stand as a leader. What are your leadership traits? Because all of us are leaders in some ways. It does not mean that uh, that you become leader and then you become an entrepreneur, because the day you start your journey as an entrepreneur, you are a leader on that day. So very, very important to make an assessment, make an honest assessment. Ask your friends, peers, that what do they think of you as in the role of a leader. Take their inputs, build that into your roadmap, and all willing, your probability of success may just improve by trying to improve your leadership push. सर बहुत सारे लोग आपको कंग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहे Yeah, I'm seeing. I'm pretty delighted. There are quite a few of them, so it feels good. बहुत से लोग And I आपको hope so I hope ये पढ़े उनको अच्छा लगे. Or as I said, I'm always available. They can connect with me on LinkedIn, and otherwise, I'll be happy to be of any help as I get to hear them out and meet them. अगला क्वेश्चन मेरा आपकी बुक से ही है कि कैन यू हाईलाइट अ की इनसाइट फ्रॉम योर बुक दैट यू थिंक इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर कंसीडरिंग or have recently made the transition from employee to an entrepreneur? So I think the first thing I would say is that pause. If you have already ventured into being an entrepreneur, right, and you've just transitioned very recently from being an employee, give, I know everybody who's an entrepreneur is on a is on a roller coaster ride, is on a treadmill, they're on a high adrenaline rush, they're all in a hurry to achieve, because in the end they're all putting their all own money probably. But it is very important that you pause, reflect, reassess, assess, contextualize your journey, and make sure that you're not too far away from the shore. I always say that when you have just transitioned, allow yourself time and space. It's like anything. When you transition from being one job to another job as an employee, it is very important that you're taking some settling in time. So either before you formally ink your journey as an entrepreneur, uh, you try and give yourself mind space. So transitioning is something you have to deliberately plan. Transitioning cannot happen that ठीक है मैं बन गया अभी बनते जाएगा. शायद हो भी सकता है. अगेन ऐसे कोई ऐसी ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है कि आप ये करें या ना करें. जो मैंने लोगों में देखा है, एंड मैं लोगों से पूछता था कि आपको क्यों लगा आप
फेल कर गए? मेरे हमेशा क्वेश्चन होता है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सके? आपको ऐसा क्यों लगा कि आप जो बनना चाहते थे नहीं बने? तो पहला क्वेश्चन होता है, सर जल्दबाजी कर लिया। शायद मैं जब ट्रांजिशन कर रहा था, मुझे वो उतना टाइम देना चाहिए था अपने आप को, कि मैं इस नए रोल में अ, अपने आप को और ज़्यादा ढाल सकूँ। इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग कनेक्टेड विथ योर प्रेजेंट स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So it's a every day you make an inch of progress. Every day you also need to stay put for a moment, reflect. And I always say entrepreneurship is about plan, plan, and plan. Plan for good, plan for bad, plan for failures. But you also need to reflect and reflect hard on every single achievement, every single day, every single minute. Because in a journey as an entrepreneur, you are distinctively alone. You may not have the benefits that you may have, or the privileges, or maybe the associations you may have had as an employee. So it becomes very critical that as an entrepreneur, you are becoming your best friend, you are becoming your worst critique, you're becoming your best teacher, and you also trying and calibrating yourself. And calibration is a very important part of the transition process. So as you transition, give yourself time and space. Many times I ask people, document your journey. You start writing, start journaling. Many times क्या होता है जब आप entrepreneur बनते हो, you are suddenly from a uh, you know एक या दो चीजों से आपकी नजर एक साथ बहुत सारी चीजों में बिखर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपकी बहुत सारी चीजें को समेटना बहुत जरूरी हो जाता है। उसको इन सब चीज को समेटना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये ट्रांजिशन इसी इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब ट्रांजिशन कर रहे हो, डू अ प्लान ट्रांजिशन, डू अ इन्फॉर्म ट्रांजिशन। So, sir, what advice would you give to employees who are navigating the uncertainties and challenges of entrepreneurship while pursuing their dream after leaving their traditional jobs? I think be real. I think being euphoric is good, being ambitious is good, but be real. I think the only thing when people ask me, I said, uh, there is immense possibility. You may have a great potential, but then your possibilities multiplied by potential is not equal to a certain predictable outcome. It may not be equal to a certain success that you may instantly look. Success is going to be seldom instant. It's a journey. Lot of the people get into this notion कि मैं entrepreneur बना, कल मैं पैसे उठा लूंगा, चौथे दिन मैं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, पांचवें दिन मैं I will do an great, and you all need to have that vision and ambition. Without that, perhaps you may not even be getting ready for your journey. But being real is a fundamental thing. Sometimes when we are real and more, when see in an employee, you can perhaps afford not to reflect and be real. I think as an entrepreneur, you have to be real. Entrepreneur, you need to have a mindset to question and challenge yourself. You need to be able to think beyond the obvious, and more importantly, reflections that come along the journey, उसको आप बहुत बारीकी से देखिए कि आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो चीजों को, आप कैसे हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपका नजरिया और आपकी इंथुजियाज्म सब कोई शेयर करे। तो एक बहुत अधीर और बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप साथ के लोगों को कैसे चलते हो। कई दफा ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स वो वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करता है, स्पेशली इनिशियल फेज में। तो योर एबिलिटी टू टेक अदर्स इन योर विजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी रियल के बाद द सेकंड थिंग आई सेड कि अगर आपका एक विजन है, आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के सक्सेसफुल स्टोरीज देखिए, उनका एक बहुत बड़ा सक्सेस का रीजन अगर देखोगे, देयर एबिलिटी टू बिल्ड अ टीम अर्लियर, देयर एबिलिटी टू इन्फ्यूज कन्विक्शन इन अदर्स, कि मैं सब कुछ छोड़ के आपको ज्वाइन करूंगा। So your ability to being real ke baad, if you have an ambitious dream, then you need to make sure that you are getting people to partner on that dream. That's the second important part. So be after you being real, your ability to sell the dream to your investors, to your potential customers, to your families, to your people you want to hire, and taking them along. So the lesson number 2 I always say is take them along. Taking them along is very, very, very important, because that's the biggest enabling factor in your journey. The third is
understand the definition of the risk in the context of the business. Risk is a very wide topic. Risks are beyond that one we would know. The market risk, the business risk, the consumer risk. ये बहुत सारी जो हमारी definition of risk होती है, वो risk एक तरीके मतलब the risk view of the business is very important. You need to every day reassess every risk that you potentially see, potentially anticipate, and be prepared for it, because your first 24 months, 33 months, 36 months are very very critical, and sometimes it's all about the weeks. Sometimes I tell people, you plan for a day, then you plan for a week, then you plan for a month, but have a line of sight for what you want to become 12, 24, 36, 48 months, because even if you're going for a formal fundraise or you're making a business plan, that needs to have a 1 to 3 or 5 years outlook. It's important that you have a 1, 3, 5 years outlook. It's absolutely imperative, but you plan for a long range but operate on a daily basis. So I think bridging that is the third important part. You take a risk view, bridge your plan, calibrate your plan, every day relook at your plan, saying, am I making the progress as desired? So if you're taking a risk view of things, if you're real, if you're reflecting well, then what you start doing is actually you start breaking your 5 years plan into smaller chunks of achievable things that you want to do. You really break into things that I want to do this hour, I want to do today, I want to do this week, I want to do this month. So that incremental progress becomes very important. So a lot of the times my planning horizon is long, or they're too shorts, but it is not in the immediate. So the here and now principle जो होती है लाइफ की, बहुत जरूरी हो जाती है एक entrepreneur के लिए. I should be in the present. I think one leg in today and one leg in tomorrow is the right way to be an entrepreneur in many ways. कि मैं आज जहां खड़ा हूं उसको सिक्योर करूं, कल जिस फ्यूचर में कदम रखना चाहता हूं उसके बारे में जरूर सोचूं, बट आई प्ले दिस बैलेंसिंग एक्ट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मैनेज these aspects when I try and become an entrepreneur. जी सर, ये बहुत अच्छे एडवाइस आपने लोगों के साथ शेयर किए जो कि इस जर्नी पे हैं और इस ट्रांजिशन में। अ, सर आपकी बुक जो है बहुत ज़्यादा रियलिटी फोकस है। तो हाउ डू यू बैलेंस पोर्ट्रेइंग द रियलिटी विदाउट डिस्करेजिंग द दोज़ कंटेम्पलेटिंग सिमिलर जर्नी? So as I've been saying, I think सबसे बड़ी जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ जब मेरे से पूछते हो, तो मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ कि entrepreneur success is surreal, but an entrepreneur is real. सक्सेस काफी बार सरियल हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो आपका जो सब entrepreneur is all about being real, and that's a reality जो हमें हर दिन हर मोमेंट याद रखना पड़ेगा. आज अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं जितने लोग हैं, शायद काफी लोग जो इसमें हैं, and I can see some of my friends are there, some of my people that I know very well, and most of them are entrepreneurs, and there are seasoned entrepreneurs, and many of them are successful entrepreneurs. अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये सबसे बात बोलेंगे कि one of the reasons even which they struggle today, or maybe they want to improve, is your ability to become much more real, much more focused, much more laser sharp on your vision. So realism is a very important part of being an entrepreneur. So Jubin, during your research, did you come across unique strategies or approaches that former employees have employed to overcome challenges and achieve success in their entrepreneurial endeavor? I think one good thing a lot of good employees do, or rather, they are very detailed. I think, and this also comes from the whole thing of they want to be more prepared. I think you can never be adequately prepared as an entrepreneur. As an entrepreneur, you will always, any level of preparedness is still less. But what I like about some of the things that I saw is that वो शायद 3 साल बाद entrepreneur बनना चाहते हैं. उनकी खुद की रिसर्च, उनकी खुद के प्रयास, उनकी खुद की efforts so आज से है, and they're always in a conversation mode. There is this whole thing about a 2-chair conversations, and where I picked up the most, there are people today, every week I'm at least talking to 50-60 people. I teach at colleges. Next week I'm going to the Entrepreneur Development Institute in Ahmedabad to address their alumni. I see a lot of people who seek my time. For example, they just want to talk, they want to know more. So the one important thing that I see some of these employee transitioning into entrepreneurship, what they do well is they come prepared. They come with a lot of research. They come
Yes, there's always a risk of overdoing things. There's sometimes, you take a lot of, in the name of being prepared, sometimes you can procrastinate. See, this is a strange balance that you need to craft. I can sometimes, I want to be prepared and perfect. I will procrastinate. So the sense of balance becomes very important. But keeping that aside, what I have seen is they use the best of an employee's world, employee's view, which is research, which is about seeing what makes, because a lot of the employees in a modern context are also managers, leaders. They know how to take people along. And because they come from that background, they also start focusing on things apart from the core business idea. They're always looking at what will make the business idea thrive and succeed. तो अगर मुझे कल एक बायोडिग्रेडेबल फिल्टर बनाना है, जो कि कोई नहीं बनाता है, वो एक आइडिया ही अकेला, मेरा वो आइडिया लेके ही मैं आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले सोचते हैं इसको हम सेल्स, इसकी कैसे सेल्स होनी चाहिए, इसकी कैसी मार्केटिंग होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा टाइप के एम्प्लॉय मैं हायर करूं, मैं एम्प्लॉय कहाँ से लूं, मैं इस पे कितने पैसे लगाऊं। मेरा लॉट ऑफ द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि सर मैं 3 महीना में एक अच्छा टीम बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकूंगा। सो दे टॉक अबाउट मी, सर मुझे ये बताइए कि मैं अच्छा टीम कैसे बनाऊं। लॉट ऑफ पीपल से कि सर अभी एवरीबॉडी इज डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना है। आई वांट टू ब्रेक थ्रू आइडिया, देन आई आल्सो वांट टू ब्रेक थ्रू अप्रोच टू टेकिंग इट टू मार्केट। So what I like is, what I've started realizing that some of these employees are also, and which is why this book is all about telling the employees who want to become entrepreneurs that it's going to be one part becoming an entrepreneur. If you want to prepare ahead of your journey. A lot of your colleagues, peers are actually preparing well. They are preparing to the level that, and also in the process of preparing, they're willing to learn, relearn, unlearn. They're challenging their own notions about market, business, their own strength. They're looking at the leadership. They're looking at their interpersonal styles. They're looking at as to how resilient we are. So these employees who have made a successful transitions have taken the best of an employee's context and married into the requirement of an entrepreneur. So that's where I think it is a great lesson. Like I said, family is important for an employee. The second is bringing the best of being an employee to an entrepreneur's context. It's the second important lesson in many ways also. And that is what some of these guys do very well. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. हाउ कैन एम्प्लॉयर्स एंड लीडर्स क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस एंड फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयज ट्रांजिशन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे तो आजकल जैसे काफी कंपनीज हैं जिनके पास वो दे इन्वेस्ट इन, दे हैव वेंचर डिविजन्स, they are investing in the ventures of their own employees. They have innovation networks. They also have a system of building entrepreneurs. Today आप किसी भी अच्छे कॉलेज में चले जाइए, किसी भी अच्छे IIM में चले जाइए, everybody has an entrepreneurship cell. तो लोग भी समझ रहे हैं कि entrepreneurship एक बहुत, वो अभी सीमित नहीं रहा, वो पहले अभी बड़े शहरों की बात नहीं रही, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं रही, हर जगह, हर जिले, हर कस्बे में से entrepreneurs आ रहे हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स जैसे उनकी तादाद बढ़ेगी, उतनी इनके लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत बढ़ेगी. टुडे लॉट ऑफ पीपल आर प्रोएक्टिवली बिल्डिंग द सपोर्ट सिस्टम. कंपनीज काफी हद तक कर रही हैं. अगर आप देखोगे आज के दिन पे जो काफी सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, और किसी ने शायद एक स्टार्टअप में काम किया है, वो स्टार्टअप बड़ी हो गई, मैं वहां से निकल के फिर से स्टार्टअप अपनी खोल रहा हूँ, और जिन्होंने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है द फाउंडर्स ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप. और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत कॉमन हो गया, और ये इसके लिए है क्योंकि दे आर आल्सो क्रिएटिंग इट्स अ पावरफुल नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस. इट्स अ वेरी पावरफुल ecosystem that you're creating. It's a collective growth, right? So earlier mindset is to why would I support people to become successful. People don't have that, but is it been done enough? क्या हम बहुत ज्यादा करें? नहीं. क्या और कर सकते हैं? करना पड़ेगा. I'm saying there is no other way. फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अवसर कम होते जा रहे हैं. As there is more mechanization, more automation, the world of AIs, the number of jobs perhaps you may have newer kind of jobs, but the job avenues will come down. The formal job avenues will come down. We'll have gig workers. We'll have the employment scenario would be very different. The economic realities of the world will be very different. It's very different in the last 3 to 4 years, 5 years back. Nobody would have done I was surprised when you said, you wanted to do a book event online. 3 years back, I would never have done, if I had not lived a COVID, I would have never assumed that
you would one day do a book and you would do it worldwide at one point of time, trying to get people into the one room virtually and making it as real. So the context of work is going to change, context of workplaces is going to change, context of workmanship is going to change. So when the world is changing, people need to change. If this is going to be the reality, large part of tomorrow's world would be shaped by people who are becoming entrepreneurs, and they will solve modern problems. Now, traditional businesses will depend on entrepreneurial ecosystems to grow. So एक symbiotic relationship बनाना बहुत जरूरी है, और ये symbiotic relationship या synergistic relationship तभी बनेगा जब लोग साथ चलेंगे. Today government is doing phenomenal amount of things. If you look at digital India, startup India, last 10 साल में the amount of funding which has happened, last 10 साल में जितने unicorns बने हैं, लास्ट 10 साल में जितने यूनिवर्सिटीज, एकेडेमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप के लिंकेज बने हैं, वो शायद किसी और देश में पॉसिबल ना हो. हमारे पास वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज, वी हैव अ ह्यूज एनेबलिंग सपोर्ट सिस्टम, बट आई डू बिलीव दैट ये और इसमें और करने की जरूरत है. एंटरप्रेन्योरशिप हैज मूव फ्रॉम द बिगर सिटीज टू टियर टू सिटीज टू कस्बेज. अभी मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ इंडिया में, प्रैक्टिकली 20-22 दिन कभी कभी महीने में ट्रैवल करता हूँ. जब मैं छोटे जगह पे जाता हूँ तो because I'm a teacher, I teach, and I also so a lot of people ask me कि सर मैं कैसे मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. और कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जब लोग बोलते हैं मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या फर्क है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में. बट देयर इज अ डिफरेंस इन द माइंड, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस. आप किसी को बोलोगे कि आप बिजनेसमैन हो, शायद बुरा मान जाएगा. आप उसको बोलोगे कि आप एंटरप्रेन्योर है, तो वो शायद आपको उसे अच्छा लगेगा. तो हमें हमारे नजरिए में काफी चेंज आई है, और काफी चेंज और होगी आगे. एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल इफ यू आर बिल्डिंग अ कलेक्टिव सिस्टम. सो जुबिन जी, आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर फॉर्मर एम्प्लॉयज को ज्यादा चैलेंजेस या फेस करने पड़ते हैं जब वो इस एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जाते हैं, एंड अगर ऐसा है तो क्यों? सी, ये बात शायद सही नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आजकल हर सेक्टर से आते हैं. कुछ साल पहले शायद जो बहुत सारी जो हमारी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी होती थी, या बहुत सारी जो लोग एंटरप्रेन्योर बनते थे, वो टेक्नोलॉजी स्पेस में होते थे, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके कुछ बनाना चाहते थे. तो जाहिर सी बात थी कि काफी लोग आपके आईआईटीज वगैरह से या इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते थे. जाहिर सी बात ये थी कि काफी लोग टेक स्टार्टअप से आते थे, काफी लोग जो बड़े बड़ी टेक कंपनीज होती है वहां से आते थे, बिकॉज शायद ये ऑलमोस्ट एक अनरिटन रूल था कि आप अगर टेक्नोलॉजी के दायरे में रह के कुछ बनाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी विल चेंज बिजनेस, द वर्ल्ड विल गो डिजिटल. सो दैट वाज द बिलीफ सिस्टम. But today I have entrepreneurs across. Today you have food entrepreneurs, you have today health entrepreneurs, today you have agri entrepreneurs. So people are becoming entrepreneurs from every part of the world. So when people are becoming entrepreneurs from every part of the world, uh, it is becoming important that we recognize that there is no industry which is going to be uh, the only यूनिवर्स सॉरी द ओनली इंडस्ट्री जहां से एंटरप्रेन्योर आएंगे. एंटरप्रेन्योर्स हर जगह से निकल के आएंगे, हर जगह हर इंडस्ट्री में हम एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे. और ऐसा भी होगा कि काफी एंटरप्रेन्योर्स नई इंडस्ट्री बनाएंगे, जो इंडस्ट्री शायद आज है नहीं, जो हम नहीं जानते हैं, कल वो इंडस्ट्रीज होगी. तो सो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर की एक्सपीरियंस अच्छी है, खराब है, नहीं, या कहीं से ज्यादा आते हैं या किसी को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना है. उस लहजे से तो शायद सारे एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉब्लम्स भी सिमिलर हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी सिमिलर है. कौन कहाँ जाएगा और किसमें क्या बड़ा बनाएगा, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट समबडी वांट्स टू डू इन हिज और हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. So sir, as an author, what impact do you hope your book will have on employees considering entrepreneurship, and what conversations do you aim to spark within the community of former employees turned entrepreneurs? सो आई थिंक मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कन्वर्सेशन हो. आई थिंक हम एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बहुत एक्टिव है, कन्वर्सेशन का कोई डर नहीं है, बट शायद हमारी कन्वर्सेशन का लेंस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. आई एम सेइंग हाउ डू वी मेक आवर एंटरप्रेन्योर स्टिक. हाउ डू आई क्रिएट ए इकोसिस्टम कि अगर 10 लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज के दिन पे 2 सक्सेसफुल होते हैं, 3 सक्सेसफुल होते हैं, 4 सक्सेसफुल होते हैं. कैन वी मेक 8 out of 10 people successful? Can we create a ecosystem कि आप एक बार फेल होने के बाद दोबारा आ सके?
तो मेरा प्रयास ये है कि हाउ डू आई मेक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लिटिल मोर प्रिडिक्टेबल, हाउ डू आई ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ एम्पैथी, हाउ डू आई इम्बाइब अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सपोर्ट, और इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो. टुडे वी आर टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट लेवल, एवरी लेवल, बट the humanizing entrepreneurship is very important. That's personal, very big personal agenda for me, because entrepreneurship is a difficult journey. Not everybody is meant to be an entrepreneur. But the reality is that tomorrow's world will be a world of entrepreneurs. So if we're talking about transitioning from today to tomorrow, I need to, I see myself as being a very, very small part of this whole change that is going to happen. And my entire attempt of writing this book in a small way was, can I foster more conversation? Can I create a support system? What would it make entrepreneurs to stay resilient? What would help entrepreneurs to make comeback in the face of failure? What will make employees much more prepared for the journey as entrepreneurs? So these are some of the dialogues which I hope to foster. I hope that more and more people join. More and more people take the formal path of becoming an entrepreneur. More and more people rely on the paths that people have perhaps taken before them. So therefore, if and I'm fairly confident that if people read these, a lot of people would actually learn from what has gone wrong in others' life to become much better at what they're planning to do. And to that extent, I'm hopeful that book will serve its purpose. I'm pretty sure I've been getting extremely good reviews. I have seen a lot. I never thought in the first few hours of the book going live, so many books would have got sold, which is a revelation to me. And I think the credit goes to all of you. And I'm seeing a lot of people who have come here. Uh, so it is very important that we all try and create a system जो जहां पर सक्सेस सबके लिए हो, और कल एक बेहतर कल बने सबके लिए. तो जैसे हम जानते हैं कि इस लॉन्च के बाद मुझे पता है कि बहुत सारे रीडर्स इस बुक को पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी. तो आप उन रीडर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक कि बहुत जरूरी है कि आप पढ़ो, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा. बट आई थिंक इफ यू नो ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, reach out and help an entrepreneur. I think sometimes entrepreneurship is always, it's a very high ego state to be an entrepreneur, so we don't ask for help. So I always tell entrepreneurs, ask for help. I also tell people that if you know of an entrepreneur, reach out and help. तो अगर आपको ये किताब अच्छी लगी, आपको अगर इस किताब से रिजोनेट करते हो, तो आपके इर्द गिर्द जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सपोर्ट सिस्टम, क्रिएट अ हैप्पी इकोसिस्टम. अ हैप्पी आई थिंक जुबिन जी के कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है. एक मिनट हम उनका वेट कर लेते हैं. वेट फॉर हिम टू जॉइन. तो व्यूवर्स, अगर आप जुबिन जी की बुक को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके अमेज़न से लाइव. Sorry, I think I got dropped for a certain यस reason. यस. So I'm ठीक है, sorry आप for this. कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू. या तो नहीं, सो मेरा ये सारा फोकस ये था कि लोग अगर हम वो कन्वर्सेशन ट्रिगर कर सके, मोर और मोर लोग इस जर्नी में जुड़े, तो शायद सबके लिए अच्छा हो. तो सर, हम आपकी बुक का लिंक जो है वो नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं. तो जो भी व्यूअर्स हमारे उस बुक को परचेज करना चाहते हैं, अमेज़न का लाइव लिंक आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. तो आप वहां से लिंक के थ्रू बुक परचेज कर सकते हैं और अपने लिए कॉपी ले सकते हैं. तो थैंक यू सो मच जुबिन जी फॉर ज्वाइनिंग इन दिस बुक लॉन्च इवेंट. एंड वी होप हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज उनको मिली होगी. और जो लोग इस जर्नी पे हैं उनके लिए तो एक संजीवनी है ये किताब. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू. Thank you, Sandeep ji, and thank you everybody for the love and affection that I've got over the last 24 hours. It feels surreal. A lot of my friends and colleagues are here, and I see a lot of people that I have perhaps not met. So thank you for joining me on this very important day of my life, and a lot of gratitude. A lot of thanks, because it also reinforces my conviction that I have done perhaps something right, and maybe I can do more for this ecosystem. So thank you, everybody.
थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। ये थे जुबिन जी, जिन्होंने किताब लिखी है अनमास्किंग स्टार्टअप रियलिटी ऑफ सक्सेसफुल एम्प्लॉयज। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आज हमने एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा जुबिन जी से कि एक एंटरप्रेन्योर अगर कोई जॉब से एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे निकला है तो उसको किस किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस किताब में शेयर किए हैं, जो कि हम सबको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए, तो जो भी इस जर्नी पे चला है उनके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड आवर चैनल। ऐसे ही हम न्यू बुक्स और उनके ऑथर्स के साथ आपके लिए आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।